Hello, hello, hello. Say something, Aradhya. Hello. Yeah, now it's audible. Hello, hello, hello. Is Yeah, it? yeah. Say Yeah, I something. think it is. Hello. Yeah, now it's Yeah, audible. it's audible. Hello, hello, hello. So, Yeah, say yeah, I something. think it. Yeah, अब audio आ रहा है. So Let's welcome. go. Yeah. So welcome, guys. We are back with a new podcast on a different channel for no obvious reason, and it's obviously so. Let me introduce you to Mr. Badal, fourth year AIML at SIT Pune, and he has been knighthooded by I don't know which Queen Victoria, but yeah, he's Sir Badal now. So I hope you guys address him with respect. And obviously, it's your host Yung Yung, and Yung Yung. yes, let's kind. So we were like हम लोग जो हमारे पुराने चैनल पे हमेशा पॉडकास्ट करते थे, it was usually meant about topic AIML कुछ something tech based, so this is also going to be tech based, but we did kind of a packed kind of thing, so every 6 months or a year we're going to do a podcast, whatever happened in We're the. not decided. We're not decided 6 months, yeah, 1 year, or what frequency. But maybe you guys can tell us Yeah. how like kitna time पे you guys want a life update, or just where do you want us to share whatever we have learned, what frequency. या तो समथिंग लाइक दैट हमने सोचा हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है, बट या वी वांट टू डू दिस बिकॉज वी लाइक टॉकिंग. हमें बात करना बहुत पसंद है, बट हम लोग फ़ोन पे बात नहीं करते, हम लोग बहुत ज़्यादा Bro, we are very boring people. So that's why YouTube is our this was one of the worst ways to make money, so we were like देखते क्या होता है. So yeah, इसको we have named it merge conflict, and not we, Aradhya has named as merge conflict, and it's true, everything is a merge conflict, to be honest. If you have worked with GitHub, you know how shitty merge conflicts are and how it messes up your whole project. And the project we are calling this is Shitty Life. So yeah, merge conflicts. Yeah. तो हमने कुछ कुछ सोचा हुआ है व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट. इट्स गोना बी अ बेसिकली अ लाइफ अपडेट अबाउट लास्ट ईयर, हमारा फोर्थ ईयर का लास्ट सेमेस्टर जो भी था वो कैसा था, एंड अभी हमारे क्या आगे के प्लान्स एंड व्हाट्स गोना हैपन एंड व्हाट यू गाइस शुड एक्सपेक्ट लेटर. सो ये चीज़ हमने एक सोची हुई है, एंड न्यू ईयर्स आई डोंट थिंक वी कुड हैव गॉटन अ बेटर टाइम देन न्यू ईयर्स टू स्टार्ट दिस. सो व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट. ओवर टू यू आराध्य. So really, this podcast is more just catching up with Yash because we don't talk much. Sometimes we call like once in like 2 months or something. It's been a while, so it's just an open group call where you guys can't speak, Yeah. but I'll just catch up with Yash. We are. That's one of the main agenda. But also, I think for you guys, especially, I think you guys would be second year or third year, right? So like, how do you manage your fourth year, and what happens in fourth year? How do you manage first corporate shit? So उसके बारे में भी बात करेंगे, और बहुत ज्यादा कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं हमने इस पॉडकास्ट के लिए. टू बी ऑनेस्ट, whatever comes up, whatever, wherever the conversation goes, we'll talk about that. Whatever you guys want to talk about, we'll talk about that. बस. या एक चीज पता है ना, जैसे जो भी दो लोग वेले होते हैं वो लोग पॉडकास्ट चालू कर देते हैं. Yeah, the random unemployed अरे friend at Tuesday night. यार ब्रो, इट्स अ वर्किंग है मैन. यू सी, यूट्यूब इज फिल्ड विद पॉडकास्टर्स, टू बी ऑनेस्ट. Yeah, anyone. I see. The thing is, anyone can start a podcast. You don't need to know a lot of shit to start a podcast, except for us. Yes, yes. You tell them the setup which we have made, they'll be shocked. हम लोग गूगल, Essay. या हम लोग गूगल मीट पे है, if that wasn't clear with his amazing quality of camera, but yeah. Yeah, सो वो एक चीज़ है. सो हमने हमारा पहला पॉडकास्ट सेकेंड ईयर या क्लीनिंग, yeah. In second year. या सेकेंड ईयर में हमारा हमने पहला पॉडकास्ट चालू किया था, एंड yeah, that was fun. That was like like we had some amazing people on the podcast. You might know your friends, they were usually वो लोग तुम्हारे दोस्त ही थे, and it was uh, it was very different when you're talking
दोस्त के जैसे फेस टू फेस, एंड व्हेन यू आर एक्चुअली टॉकिंग ऑन अ लाइव प्लेटफॉर्म इट्स डिफरेंट बिकॉज दे आर फ्रेमिंग देयर एक्सपीरियंस इन अ वेरी गुड वे। हम लोग जब बात करते हैं वो Hmm. बकचोदी में निकल जाता है जो निकल रहा है, इट्स ओके, इट डज नॉट मैटर दैट मच। बट यहाँ पे जब आके यू हियर द स्टोरीज लाइक वी हैड द प्रीवियस लीड ऑफ GDS Yaju, Mitiksha was there, we had Sairam, I think so. Skyrim. Yeah. Sairam, yeah, and he is doing very well. Like I think he's back in India again. Hmm. I don't know. I have not taken a break. So he's done Yeah, a lot of stuff. He's working on a Python library, some healthcare में research he was doing in France. yeah, He's yeah. I think been. he's back. I think he's back. Uh-huh. तो उसका ये वी आर सम रियली अमेजिंग पीपल एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेल लाइक यही एक चीज़ है कि देखिए ये मैं बाद में बोलने आता बट लेट मी से दिस, आई रिसेंटली वेंट बैक टू माई ओल्ड स्कूल जो मेरा 10th वाला स्कूल था। आई वेंट देयर विद सम फ्रेंड्स एंड व्हेन हमने डिसाइड किया मिल के जाने का वगैरह, सबकी जॉब लग गई है यार, सब कहीं ना कहीं पे दे आर शिफ्टिंग एवरीवेयर, True. and it's kind of a weird, like I don't know if you would have felt it or not. It's a very weird feeling जब कोई बोला मैं मुंबई जा रहा हूँ जनवरी से, मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, I'm shifting to हैदराबाद, यहाँ यहाँ ये हो रहा है, and it's kind of weird, like these were the people I used to play football with जो लोग एक दूसरे की पैंट फाड़ते थे वो वाले मोशन से, and now they're gonna be working in corporate lives or have doing something that is really fun for them, to be honest, and it's very weird. I can't explain that feeling, to be honest, but it's very weird. Like, No, I agree. Like, even I don't know. Abhi, I started working. I have a job in Vimanagar. Okay, as Census. So it's a 1 hour 20 minutes travel every day. Not every day, but like whenever the office days are, which is Monday to Wednesday for me. So अचानक से I have started taking metro to go there, and I dress very formally. ठीक है, so पूरा ऐसे अलग ही vibe आता है when you dress formally and you take a laptop. It has company का logo and everything, and then you're traveling in the metro for 40 minutes to go your office, and everyone's waiting in your office. So पूरा अलग corporate. It's थोड़ा बहुत shitty, थोड़ा बहुत romanticizable, थोड़ा it's nice, even fun. So that's a plus point. Sometimes तुम बॉस की गाली पड़ती है. So like वो पूरा experience है. That is true. लोग अंकल It's a very बुलाते big change. लोग अंकल बुलाते हैं, पता है, बच्चे अंकल बुलाते हैं। भाई, has not happened to me, but no, it did happen to me. अगर तू But मेरे को बहुत बोल छोटा था. नहीं नहीं अगर तू नहीं नहीं अगर तू मेरे को बोल रहा है कि तू मेट्रो में जाता है एकदम मस्त शर्ट पैंट पहन के प्रॉपर एकदम, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो अंकल Mm-hmm. बुलाएगा ही ना। एक True. True. मैं दिल्ली से आ ठीक है. रहा था, आई वॉज IMC में दिल्ली में था, ठीक है, तो आई वॉज सिटिंग बिसाइड अ सेकेंड ईयर CS स्टूडेंट, वो कहीं पे इधर NIT तिरुचिपल्ली और समथिंग तिरुचिपल्ली, सम गवर्नमेंट कॉलेज एंड उसका कुछ तो CS का ही था आई थिंक सो। तो मैं 4th ईयर में था आई थिंक, वो एंड उसका और एक दोस्त था, तो एक लड़का था एक लड़की थी, एंड वो देवर बोथ इन 3rd ईयर एक्चुअली। तो मैं लाइक वो लोग Mm-hmm. नॉर्मल इसमें थे एंड आई वाज मैं ब्लेजर पहना था, इट वाज अ T-shirt एंड अ ब्लेजर। तो मैं उनसे लाइक आई वाज टॉकिंग टू देम एंड वो लोग ऐसे ही आई स्ट्रक अप द कन्वर्सेशन, बट जो मेन उनके बीच में बात Mm-hmm. चल रही थी दोज आर अबाउट रिजल्ट्स, कि DS का कुछ तो पेपर का Right. रिजल्ट आया था एंड दे वर सिटिंग इन द प्लेन एंड दे वर एक्चुअली बिचिंग अबाउट समथिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है वगैरह। तो आई काइंड ऑफ चाइम्ड इन, ऑब्वियसली कहाँ ज्ञान पेलने के लिए जगह थोड़ी चाहिए। तो आई काइंड ऑफ चाइम्ड इन, बोला Mm-hmm. अंकल आपको कैसे पता है, लाइक दैट वाज द सिचुएशन वेयर 3rd ईयर मेरे को अंकल बुला रहे हैं। Shit. हाँ, तो मैंने फिर बोला ब्रो मैं 4th ईयर में हूँ, सीनियर हूँ, ओके या देन इट काइंड ऑफ वेंट, इट वाज अ गुड कन्वर्सेशन, वी मे बी टॉक फॉर 30-40 मिनट्स ऐसे, प्लेन राइड जो भी था, Mm-hmm. बट या बट अंकल very weird, Right. very like if you like we are not in our teens anymore, or yeah, to be honest, True. if you want True. to look at age wise, And I still am technically. I am 20 still, but कौन सा टीन 20 में कौन सा टीन होता है रे? होता है वो some people like कौन 18 to 20 still. how are you 20 years old? It should be 2004 for you, I'm right? I know I'm a 2005 born. मैं तेरे से 2 साल बड़ा हूँ साले, भैया बोला। भाई तू 2003 born है? या
crazy. No, 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 ठीक बोल, है, हाँ बोल। यश अंकल then. या शंकर, और यही 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 बोलना बाकी है। ये था नहीं तो लाइक, हाँ मैं जो, लाइक ओके यू कांट इमेजिन, लाइक आई हैड फ्रेंड्स यू नो द स्टूपिड, लाइक सबसे अजीब दोस्त थे, लाइक यू नो वी हम लोग इतना फुटबॉल वुटबॉल Hmm. खेले थे, आई नो आई डोंट लुक लाइक इट, बट आई यूज्ड टू प्ले प्रॉपर फुटबॉल खेलते थे हम लोग, तो हम लोग बहुत टाइम साथ में स्पेंड करते थे। अब वो बंदा, Mhm. यू कांट इमेजिन, वो शर्ट पैंट ऐसे ड्रेसअप होके आया कि अच्छे से एकदम, यू नो, अच्छे से कपड़े Yeah, वगैरह पहन के yeah. आया, एंड ही इज टॉकिंग फॉर्मली एंड काइंड ऑफ नाइसली, इट्स वेरी It's a वेरी it's a वियर्ड। transition, yeah. Yeah, and I saw him after maybe 6 years or something like that. हमारा 6 नहीं 4 years maybe. Mm-hmm. तो yeah, it was genuinely very weird for me. तो like वो एक kind of, सब लोग इधर कोई बाहर जा रहा है, कोई अब्रॉड पढ़ाई कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो अगेन Mm. वो एक जो लेवल लाइक यू वर सम, लाइक वो वापस आता है, व्हेन यू कीप ऑन टॉकिंग दैट थिंग कम्स बैक, दैट फीलिंग काइंड ऑफ कम्स Right. बैक, बट Mm-hmm. you get that ये कि it's changing या बदल गया, like yeah, and I don't like that, Yeah, like personally. interesting. Okay, Yeah, so it's new phase of life, I think, yeah. Many people are gonna have this job and maybe gonna keep this for like, I don't know, year, 2 years, 3, 4 years, God knows. Yeah, it's gonna become their way of life. Yeah. So So let, also बोल बोल। you mentioned you're talking about results to that second year unit, right? How much you think results matter in placements? Because I think once the placement season starts, right? If there is one bracket, like I think 7 to 7 plus, sometimes yeah 7 plus I will say, and then us bracket ke andar anything can happen. Like 9 pointer and 7 pointer, same place, same job, very possible. यू आर नॉट रॉन्ग, बट यार ये मैंने मेरे देखा हुआ है दोस्तों के साथ, एक चीज़ है कि बहुत randomization. या रैंडमाइज देख, देख इट्स स्किल बेस्ड एंड लक बेस्ड आई थिंक प्लेसमेंट्स, टू बी ऑनेस्ट। True. या तो 100% agree. या तो इट्स स्किल बेस्ड एंड लक बेस्ड, एंड उसमें वन थिंग इज कि देयर माइट बी सम कंपनीज जिसमें तुम एलिजिबल नहीं होता बिकॉज तुम्हारा 0.01 से CGPA रह जा रहा है, या Hmm. किसी में अगर इफ लाइक इमेजिन यू गेट अ कंपनी जिन्होंने 8 का ये किया हुआ है, आई नीड 8 GPA के ऊपर, बट तुम्हारा ग्रेड इज समवॉट 7.99, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है दैट डजंट राउंड इट ऑफ, आई थिंक सो, तो यू Yeah. आर नॉट एलिजिबल, तो वो थोड़ा सा आई थिंक खटकता है, काफ़ी लोगों को खटका होगा, नॉट ये, बट Hmm. आई थिंक हो सकता है कभी कभी ग्रेड का ये, एंड व्हाट आई हैव सीन इज हमारा जो प्लेट लाइक बहुत सुपर सेट इज आई थिंक फॉर एवरी वन, तो मेरे SRM के दोस्त भी सुपर सेट यूज़ कर रहे हैं, MIT के दोस्त भी सुपर सेट Mm-hmm. यूज़ कर रहे हैं, एंड सुपर सेट हैज़ अच्छा. एलिजिबिलिटी फ्रॉम 10th, नॉट जस्ट हमारा कॉलेज का, Oh. तो you need above Mm-hmm. 70% in 10th, above 70% in 12th, and some GPA कॉलेज वाला, तो अच्छा. वो सारे एलिजिबिलिटी, तो अगर इवन इफ योर GPA इज मे बी 8 पॉइंट समथिंग, यू आर एलिजिबल मोस्टली इन एनी कंपनी, बट अगर तुम्हारा 12th में 70 से नीचे है समहाउ फॉर सम रीज़न, Yeah. तो वो Yeah. अनएलिजिबल हो जाता है सीधा सीधा। Nee, see, eligibility ke mara, like that is obviously there. That's what I said. Every company will have a limit, and it's not. I'm not saying कि CGPA को एकदम ignore कर दो, उसके basis में कुछ होगा ही नहीं. But let's say you are eligible, उसके बाद how कितना far you are eligible. Like अगर 76 था या तुम्हारा 98% था, there are chances that you're gonna get mixed up. It's gonna come down to the interview. It's gonna come ओके, down to okay. नहीं आई एग्री थोड़ा सा इस बारे में। हेलो, आर वी इन सम टेक्निकल डिफिकल्टी? Yep, we are in a technical difficulty. We'll be right back. I think we had some network disconnection. We are back. यार वो पता है, आई वॉज टॉकिंग टू सम ऑफ माई फ्रेंड्स, लाइक हमारे जब जो स्टार्टअप कम्युनिटी में ये जो HRs हैं,
वो लोग जीपीए Mhm. नहीं देखते इतना, जो दिस स्पेसिफिकली जो स्टार्टअप कम्युनिटीज़ के एचआर्स में जिनसे मैं मोस्टली बात कर रहा था, तो Mhm. जब मैं उनसे बात करता ना, वो लोग जीपीए नहीं देखते, बट दे यूज इट समटाइम्स एज अ टाई ब्रेकर। Hmm. No, it's definitely gonna matter somewhere. But हाँ, I'm saying that's not the only thing that matters. नहीं ऑफ कोर्स नॉट, देख, what I genuinely think for any kind of interview, not just college placements, if you go for any kind of interview, any kind of system where you're gonna be sitting in front of people and presenting, let it be a presentation, a marks-based presentation, Mhm. an interview or test, there is some skill level involved, there is some luck, and yeah, and वो दिन में whoever is a jury member. So like Yeah. presentations में भी हमारा होता है कि when you have multiple panels, one panel might be a bit lenient, one panel might not be lenient. Yeah. पर्सन के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो आज कैसे प्रेजेंट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इवन इफ योर स्किल्स, 100%. या इट्स लक, स्किल्स, इवन दो स्किल्स टेक्स अ लॉट ऑफ ये लक स्किल्स, एंड उस दिन क्या हुआ, लाइक बेसिकली बहुत ज़्यादा लक फैक्टर आ जाता है लाइक मेरे हिसाब से, वो बट exactly. I'll consider as good luck. या सी आई It's हैव, luck and skills. It's या बहुत ज़्यादा variability what can happen. या सी Like because you see, I'll tell you, मैं so one crazy thing about startup is anything can happen. You can do anything. You can have any role. I have been taking interviews since November. Almost every day I have taken an interview. Every day. Okay. And I'm remembering like way how I approached the first time I started taking interviews was how I'm taking it now. Like yesterday, I was telling her, right? Yesterday I took an interview of a girl who was in Portugal. So, like the approach is very different. You know, it has evolved, it has matured. I know how to obviously, take interviews obviously. well. So it depends so much on the interviewer also, right? I didn't know how to do a lot of stuff in the beginning. So work candidates maybe I've judged too hard. As the time evolved, I know I made my questions better. You know, be like, okay, what basis I should not be biased or too fixated on, or how much of a air room or space I should allow the candidate. So ये सब में depends on the interviewer. I have a friend who is very strict in interviewing. वो भी मेरे साथ ही join करा. We joined in like August or something और November से मैं interview ले रहा है, ठीक है. Crazy होता है. So uh, उसका style he is more rough interviews में. He'll drill down a lot. It's hard to impress it. Like it's hard to impress me, but I'm थोड़ा more lenient. Okay. So everyone has a different style of taking an interview, right? I can imagine anyone who is coming to take किसी का भी interview to our college and everything. Even my company was like, we might come to our college because we want people like you, not trying to flex or something, but like ऐसा माहौल बन रहा था शायद आए भी. So like the interviewers are people is what I'm trying to what I came into a realization, you know, and उनका मूड क्या था, उन्हें कितना इंटरव्यू लिए हैं, हाउ डू दे जज, देयर आर वेरीज अ लॉट, यू नो, पर्सन can hundreds of variables. So it is a lot luck. So don't be that hard on yourself is what I learned. Yeah, but okay, I'll ask you a question this way, like, Hmm. would you judge communication skills more than tech skills in an interview? More than see, I do both. Honestly, if it's a tech job, I judge 70% tech, 30% communication. But the thing is, I go for a tech interview. उनका communication interview has already been done, या नहीं, so आई they टेल are यू, a good आई टेल candidate. यू वाई, जो एक ओके, मैं अभी कहीं पे तो था, तो वहाँ पे Mm-hmm. इसी के बारे में मोस्टली बात चल रही थी, लाइक इट वाज अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स, एंड ये Mm-hmm. गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री के बारे में, टू बी इफ वी बी मोर एग्जैक्ट. Right. एंड वहाँ पे उन्होंने Mm-hmm. क्या बोला, इफ़ वी आर लुकिंग एट एंट्री लेवल रोल्स, इवन इफ दे नो द बेसिक, इट्स ओके बिकॉज उनको ट्रेनिंग मिलेगी. The thing that we True. look for is communication skills in terms of explaining, talking, एंड काइंड ऑफ थोड़ा इनिशिएटिव लेने जैसा. उनको जो इनिशिएटिव वाला चीज़ है वो बहुत अच्छा लगता है कि कोई हद से ज़्यादा काम Right. कर रहा है. 100%. 100%. See, I
I specifically go to take technical interviews only, but मेरे पीछे एक राउंड होता है कम्युनिकेशन का और मेरे आगे एक राउंड होता है कम्युनिकेशन Okay. का ठीक है. So the CEO directly takes one communication round. पीछे the vice president takes a communication round. तो कम्युनिकेशन में मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता. 30% I will and I do ask questions about agency and everything. How much do you know own a project? Because अभी I think 2 दिन पहले ही our CEO was talking about we have decent high IQ tech people, but we don't have anyone who will do something about a problem and take complete responsibility over that. Okay. That is the main problem. Like people don't take agency over their main like over their stuff. They have to be constantly na okay okay karo mujhe report chahiye mujhe do, rather than be like okay this is my project, I'll do something for the company, I'll and I'm not saying you should have this mindset for every company. Maybe you don't like that company, maybe you're like whatever, I'll take the initiative when only the manager pokes me. But you know, if you're going for a company, you thoda bahut be like, it's really valuable that you show some agency, right? You own your project. But now, like in my company, it's a startup. Uh, I, like I think pata hi hoga if I have not mentioned this, but oh, it's so much about taking agency because इतने managers ही नहीं है. Yeah, you don't You know, like यार you don't मैं have everyone yeah sitting on top of your head mm, to tell you. या नहीं वो देखो अब ठीक है स्टार्टअप के बारे में सो आई एम वर्किंग ऑन अ स्टार्टअप तो मेरे पास तो कोई भी नहीं है आई यूजुअली मोस्टली अकेला काम करता हूँ तो आई हैव टू डू एवरीथिंग दैट्स अ गिवन बट इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रॉपरली एस्टैब्लिश स्टार्टअप विच इज़ रेवेन्यू मेकिंग जिसमें है ही 20 लोग तो यार झाड़ू Hmm. पोछा मारने से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर ले लो क्लाइंट से बात करो डेवलपमेंट करो सब चीज़ का तो इट बिकम्स मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल थिंग टू बी ऑनेस्ट लाइक तेरे पे भरो True. कोई इवन इफ यू आर वर्किंग देयर एज एन इंटर्न वो जो भी बंदा होगा वो तेरे पे भरोसा कर रहा होगा बिकॉज उसको पता है Mm-hmm. कि ही डज नॉट हैव Yeah. I like if I have to hire somebody to work full time, I might not be able to pay 60k 70k a month to him. But Mm-hmm. yeah, I Yeah. might be able to pay 15k 20k, and I might be able to give him a bit little more leeway, a little more responsibility. Mm-hmm. उससे काम करेगा तो वो अलग ही है. But Yeah. ये एक थोड़ा सा होगा. This is a very genuine thing with startups. Like मैं जिस कम्युनिटी में हूँ इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स उसमें ना जो ड्रिवन लोग हैं वो लोग बोल ही दिया यार पैसा थोड़ा कम होगा तब भी चलेगा बट मेरे को जो काम मैं अच्छा हूँ मेरे को वो करना है Mm-hmm. उसके प्रॉपर एक आई वांट लर्न अ कंप्लीट पाथवे लाइक यू हैव अ डेवलपमेंट Mm-hmm. लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग कोड करते हैं जस्ट वन पार्ट उसके One part. Yeah. Yeah. उसके इतने सारे पार्ट्स आगे होते हैं पीछे. या एंड True. यू हैव टू लुक एट इट ऑल ऑफ देम तो वो मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ मोस्टली तो वो लोग जो बोलते हैं ना कि हम लोग 18 18 घंटे दिन में डाल रहे हैं उसको और क्या ही करना है he it Hmm. takes a toll on your health obviously but he's like I'm so into it right now I've got summit fever हम लोग जो भी डेवलप कर रहे हैं 4 महीने की टाइमलाइन में वी आर मेकिंग समथिंग दैट्स नॉट इवन पॉसिबल फॉर एमएनसीज उसका ये बोलना आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज टू बी Yeah. ऑनेस्ट बट या Yeah. And सी it's जिस it's wait. It's just about that. You know, you own a product completely. You own a part of the company. I'm not saying this will be true for all the startups, but let's say if you even thoda sa get the I don't know, the manager's attention, you will be given a part of the company, not just a small code of it. या Does that make sense? या बट यही And है वो कि पूरा तुम्हें end to end manage करना होता है. You need to take complete entrepreneurship sort of responsibility over that segment of the company itself. या एंड You have to see everything. there are people who want to go Yeah, into MNCs and work वहाँ पे full time जहाँ पे job security and that's they are they are fine it's their ये it's completely a alright option तुम्हें नहीं just because हम लोग कर रहे हैं या फिर कोई और कर रहा है does not mean you want to do it and that does not make it a wrong choice 100% dude, 100%. It's just what you want to do. It's अगर अभी भी I feel like should I switch to a bigger company and just work on one part of thing and just be very specialized in that. That is, if you like that, go do that. There is no it's right no or wrong वही here. ना उसमें ये it's okay it's genuinely like if I tell you कैसे सोच like I have a mindset I look at myself in 10 years into future and I see कि अगर 10 साल बाद I wanna be here, what should my next decision be? And there Mhm. might be someone who is looking 2 years into their future. क्या मेरे को 2 ही साल करना है?
Let me build a good portfolio at a good company which everyone knows. It's okay. That does not make the system wrong. It does not make their thought process wrong. It does not make them a bad person for choosing that and you choosing something else. This is Hmm. genuinely okay and it's your future man. तेरे को जो सही लग रहा है like Exactly. you are still working here and हम लोग जब last time बात किए थे तब भी तू गाली दे रहा था कि maybe I wanna switch, maybe मैं करूँ क्या, Yeah. या you are thinking like and तेरा क्या मैं abroad का ये करूँ क्या पढ़ाई का करूँ या Hmm. ऐसा मुझे second thought सभी को आता है but you are still working hard, you're still liking the Right. place you are working at. I agree. Is this? I think what my personal belief is about this, like where you should, what type of company you should work at. Uh, I think especially for freshies, I think they should have a preference towards startup and not uh, maybe not for everyone, but a lot of the people, I think they can learn so much being in a startup as their first job. Like I have manager. So my fufu, uh, Yeah, if my yeah, uncle. he is yeah my uncle. He is a manager at a very high level in Microsoft right now. They have some kind of six ED, some classification system for ranking, right? If you're aware. So he is like I think just two or three below the fucking CEO or something. Okay. And he's like, don't work in Microsoft. Go to a startup as your first job. I'm like, if that guy is saying that, he is probably saying it with something in mind. Okay. He's like, just learn the entire as your first job. He's saying he's not saying just go work Yeah, in a startup, right? मैं I As your first job. I'll tell you why I think लोगों की ये mentality क्यों थोड़ी change हो रही है. I'll tell you the reason. Hmm. जब से GPT आया है in from 2022, there has been a very large shift in mindset about programming as a whole job field, to be honest. Hmm. So because programming has become something that you can maybe replace with GPT, I think एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए is skills about development is not the same as skills about programming. लीड Hmm. कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करना इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्स नॉट प्रोग्रामिंग, इट्स द वे Yeah. यू कैन थिंक. अब यही चीज तुम एक यू कैन आई टेल यू समथिंग, you cannot directly apply lead code level problem solving into any natural problem. ठीक है. Yeah. It's hard to Sometimes, do that. yeah, sometimes the amount of complexity that you are putting into something is not same as the what you actually need in real world. ठीक है. तो Yeah. वो सोचना, वो सारे प्रोज एंड कॉन्स को वे करना, इट्स वेरी डिफरेंट. इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी 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 डिफरेंट. तो वही है कि यू कैन बी अ गुड प्रोग्रामर एज वेल एज अ गुड डेवलपर एज वेल एज गुड पर्सन, पर्सन हु इज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ये स्किल. एंड ये तुम, Managing stuff. या ये तुम तब डेवलप करोगे जब तुम एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाओगे. हम लोग जितने भी Mm. बार पॉडकास्ट पहले भी किए, वी हैव हैड अ वेरी बिग ये इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट प्रोजेक्ट्स बनाओ, नॉट जस्ट अ पार्ट. डोंट Hmm. जस्ट बिल्ड अ मॉडल एंड लेट इट बी. तुम एक मॉडल बनाओगे, वो मॉडल किसी एक फुल स्टैक एप्लीकेशन में उसको यूज़ करोगे या फिर कहीं पे डिप्लॉय करोगे, वो एक पूरा लाइफ साइकिल जानो कैसे होता है. वाई डिड यू चूज रेंडर एंड नॉट ए डब्ल्यू एस, जबकि ए डब्ल्यू एस पूरी इंडस्ट्री यूज़ कर रही है. वाई डिड यू चूज वर्सल एंड नॉट समथिंग एल्स. तो वाई डिड यू Hmm. डू दैट, यू कांट जस्ट से मनी एंड ये. तुम्हें कहीं ना कहीं पे जस्टिफाई करना पड़ेगा उसको. तो वो जस्टिफाई क्यों करे, बिकॉज इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग, आई आस्क यू समथिंग. तूने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, हाउ मेनी ऑफ देम Hmm. कैन एक्चुअली बी गिवन टू अ क्लाइंट. Probably none. Like fully कोई नहीं है. एक दो actually one two we can give. I have one two projects which is like complete end to end, यस. but 80% are not. It's बिल्कुल भी नहीं. just one thing. इवन फॉर मी लाइक आई, ठीक है, मेरा हार्डवेयर में तो थोड़ा सा एक डिफरेंट है, बट इवन व्हेन आई एम वर्किंग लाइक रिसेंटली आई वाज मेकिंग समथिंग फॉर सम हॉस्पिटल, थोड़ा सा एक छोटा सा, दे हैड टू रीवर्क समथिंग. तो उसमें भी इट टुक मी अराउंड 8 hours एवरी डे फॉर 3 to 4 days विद अ लॉट ऑफ Mm-hmm. थिंकिंग टू कंप्लीट इट. क्यों, बिकॉज Mm-hmm. एक बार वो बनाना इज नॉट ओके, आई हैड टू गेट द डॉक्टर, शो इट टू हर, उनके फीडबैक लेके उसको मॉडिफाई करो. एंड बिकॉज वी चेंज समथिंग फ्रॉम अ सेंसर बेस्ड मॉडल टू अ कंप्यूटर विजन मॉडल, उसकी एक्यूरेसी उनके Mm-hmm. लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. कि आई Right. डोंट केयर इफ इट्स स्लो,
but I want its accuracy to be 99.8%. I don't want it to be Mm-hmm. 90%. Why? What Right. 90% accuracy tells you is out of 10 attempts it gets once wrong. Out of Hmm. 1000 attempts 100 are Yeah, wrong. yeah, तो ऐसा वो काइंड ऑफ yeah, एक ये बन जाता है कि yeah, कितने फॉल्स पॉजिटिव्स आ रहे हैं. लाइक एक मीम, आई yeah. आई डोंट नो इफ यू नो अ मीम. सो जब कंप्यूटर विजन नया नया आया था तो किसी कंपनी ने दे हैड अ false positive rates in terms of something going into a box. So they had a packaging and some item had to go inside the box and there was some chance Uh-huh. of it being नहीं जाने का chance था and वो खाली डब्बा ही पैकेजिंग में चला जाता था, so it wasn't good. So what they did was Yeah, they implemented an AI system which stops the whole conveyor if the box is empty, yeah, yeah, something, yeah, I know, I know. something. I've heard of And this it story. Yeah. pissed so many people off because uska accuracy was 95%. So out of every Hmm. 100 tries, it got 5 wrong. So Yeah. what, and it stopped the entire conveyor line. So what the workers did was उन्होंने एक फैन लगा दिया, जो भी हल्का खाली डब्बा था वो खाली डब्बा उड़ के नीचे गिर जाता था. सो Hmm. जो मैनेजर्स को ये बात पता नहीं थी. दे देखे कि उनका एआई सिस्टम के कारण एक्यूरेसी 100% आ रहा है, ये आ रहा है. दे वेंट एंड चेक इट, वहाँ पे किसी ने एक टेबल फैन लगा के रखा हुआ था. Yeah. तो Yeah, I've heard this story. Yeah. या तो लाइक आई डोंट नो अब ये कितना सच है या क्या है ये, बट या ये I एक think I think it's way on the it's a business level solution versus a full tech oriented solution sort of thing. हाँ, नॉट एवरीथिंग. वही parallels हो गए वहाँ पे. या नॉट एवरीथिंग शुड बी अ टेक थिंग. लाइक मेरे हिसाब से Hmm. जिस चीज़ पे ओके, सो रिसेंटली अब ये मेरे घर का ये है. I like my parents wanted me to make a CCTV camera. All right. Uh-huh. So Interesting. yeah, so nahi, it's simple. You take a microcontroller or a Raspberry Pi or something, you attach a camera, you write some software, and it works. And mine was working, Hmm. but Right. कुछ कुछ problems थे. So some range issue Hmm. was there. Obviously, I cannot customize the hardware that I've already bought. Right. जो मैं अपने PCBs बना रहा हूँ, so the PCBs I'm working on for Physiomize, I make those custom PCBs. उसमें एंटेना कस्टम है, ये Uh-huh. कस्टम है. बट ये सिस्टम के Right. लिए आई डिड नॉट मेक अ कस्टम पीसी बिकॉज पैसा टाइम बहुत लगता है. वॉट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट आई टुक Right. दैट एंड आई मेड दैट. तो रेंज Hmm. इश्यूज, रिलायबिलिटी इश्यूज, एंड 10 दिन डिप्लॉय किया वो हमने एंड उसमें कुछ कुछ चीज़ें कमी थी. ओके, लाइक द सॉफ्टवेयर वॉज एंड Hmm. वेरी बिकॉज मैंने भी वाइप कोड किया हुआ था आधा. ठीक है. इवन दो मैंने सब आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग लाइन बाय लाइन एंड चेंज्ड एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड, और इट वाज स्टिल वाइप कोडेड. मैंने एक दिन में रेडी किया था यार. Hmm. ठीक है. तो Hmm. it wasn't as perfect as somebody, maybe somebody who is aged or somebody who is not technically does not want to spend so much time understanding the software. It should work. किसी किसी के ये होता है Right. ना, you just it should work. Yeah, yeah. तो वो पॉइंट तक आया नहीं एंड देन वी रिप्लेस्ड इट विद अ क्यूबो का ये क्या बोलते हैं नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा. एंड माय फादर वाज Uh-huh. हैप्पी. मैं बोला ये जो Right. सारे फीचर्स है ये मेरे इसमें भी है, आपको सिर्फ समझने में आधा घंटा लगता है, बट उसमें बोला यूज़ क्या है. आई Right. अंडरस्टैंड. That's Hmm. a me problem. That's not a him problem. But Right. I got Yeah. 5 days. The Cubo might have had 30 hardware engineers, 10 software engineers, 70 Yeah. QC testers, and worked on it for Yeah. maybe 3 months with 2 crore ki funding, and then they made that whole Yeah. thing. Yeah. Na? There's a Obviously. difference. Obviously. यही है कि there's a big difference about how industry works. And like हमें हमेशा बोलते हैं ना इंडस्ट्री एकेडेमिया का तुम लोग, you should be the bridging gap between them. And yeah, there's a lot of things different that happen in the industry in terms of hardware or software. Like you're working on an AI, like तुम AI, you work in an AI based company. Is it same as Mhm. the way you work on your projects in college? Is the workflow same? No. Is नहीं. yeah, Definitely not. even though you might be using the same tech here, तो तुम Google Colab use कर रहे हो या फिर you are using Mm-hmm. something that works all the time or some Mm-hmm. custom here, but you might have a different workflow, right? The team approach is very different. You Okay. know, I think one thing which again I learned is how these companies have like managed their team members. You know, it, you have an entire team. There is a guy for QI. There is a guy for backend. There's a guy for front end. There's a guy for full stack. There's a guy for AI thing. There is a project manager. There is a business analyst. You know,
there is a data analyst, and they all are in one project. Yeah. So again, you if you want to talk about specializations, we you have specialized role. डेटा AI ML का काम डेटा साइंटिस्ट कर रहा है, फुल स्टैक का काम ये बंदा कर रहा है. That is one way of working, which I think many of the companies work in this similar way. They have specialized roles where your expertise is there. You don't have to be a master of every tech stack ever created. So, and you work on your stuff, which there are people who will handle other stuff. But at the same time, you need to understand all the architecture thoda thoda. Yeah, you cannot. That is that is that is the thing which you learn uh, in a startup भी. And okay, ये तो ठीक है, technical aspect हो गया, थोड़ा थोड़ा सारा stack, that is fine. Overall flow कैसे हो रहा है system का, and how is that actually helping the business? Because the CEO is going to ask very simple question: how is this making me profit? Why have I hired you guys to do this thing? मेरे जेब में पैसा आ रहा है या नहीं? That is the question. That is the thing which matters. And it's not true for every company. Some company may be doing it for a public good or welfare. And but उनको at भी the end, पैसा there is चाहिए. some end result. या At the end, there is some end result that you need to focus on, which is not related to your tech stuff. It's related to a bigger problem which you're trying to solve. या आई थिंक यू So देख ये ये चीज हम लोग हमेशा बोल. ओवरआर्चिंग चीज पता होनी चाहिए कि कैसे फ्लो हो रहा है ये प्रोजेक्ट में, तुमने कितना पैसा डाला है, हाउ इज दैट एक्चुअली टैकलिंग योर बिजनेस प्रॉब्लम. That understanding के लिए you need to zoom out from your just मुझे एक मॉडल बनाना है to the entire big picture कि how is this entire big team working on that project. वो उसके लिए आई थिंक स्टार्टअप्स आर रियली गुड, बिकॉज तुम बहुत सारी चीजें करोगे. कभी तुम बिजनेस एनालिस्ट करोगे, कभी तुम डेटा एनालिस्ट का रोल करोगे, कभी तुम प्रोडक्ट मैनेजिंग करोगे, सारे लोगों को मैनेज करोगे, कभी तुम रिपोर्टिंग दोगे उसको, कभी तुम डेटा सोर्स करने के लिए दूसरे वेंडर्स के पास जाओगे. तो you're going through a bigger picture. You're यू आर आई थिंक यहाँ पे वन थिंग दैट आई Mhm. ये सेज, जब तुम्हारी टोटल टीम ही 20 लोगों की है तो इट्स गोना बी अ क्लोज नेट टीम. ठीक है, नंबर वन एंड True. नंबर टू जो तुम बोले ना कि हम लोग हमेशा क्यों बोलते हैं कि यू शुड एक एटलीस्ट जिंदगी में एक ना एक बार इन योर कॉलेज लाइफ एटलीस्ट एक पूरा प्रोजेक्ट बनाओ एंड डिप्लॉय करो. डज नॉट मैटर Mhm. अगर तुम्हें 2,000 रुपये लग रहे हैं या ये हो रहा है जी. यार तुम लोग वीकेंड पे हम लोग बाहर जाते हैं, हम 2,000 रुपये उड़ा देते हैं हर हफ्ता. ठीक है, लाइक Yeah. तो वही एक चीज़ है, पुट इन 2,000 रुपीज इन क्रेडिट्स और समथिंग एंड जस्ट डिप्लॉय दैट प्रोजेक्ट. उसकी मे बी फेसबुक पे मार्केटिंग कर दे. लाइक वन ऑफ माई, लाइक दिस इज समथिंग दैट वन ऑफ माई फ्रेंड्स डिड. ही मेड समथिंग फॉर ओल्ड पीपल, अ गेम और समथिंग दैट टेस्ट देयर मेंटल काइंड ऑफ ये. उसको डेटा चाहिए Uh-huh. था नंबर वन किसी तो प्रोजेक्ट के लिए, एंड ही वांटेड टू डू अ सोशल एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ थिंग. सो उसने क्या किया, ही Mhm. मेड दैट होल थिंग, ही मेड इट वेरी फ्रेंडली, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग, जस्ट 4 buttons. ही मेड इट लाइक कहूट्स वाला ऐप. Yeah, yeah, yeah. तो ही मेड इट समथिंग वेरी कहूट्स वाला ऐप. तो इट्स वर वेरी इजी, 4 to 5 buttons एंड जस्ट प्रेस इट एज फास्ट एज पॉसिबल. ठीक है, यू सी एन Right. आंसर एंड यू प्रेस इट एज फास्ट एज पॉसिबल. तो उसने Right. क्या किया, ही डिप्लॉयड इट ऑन AWS, सब पे वे किया, एंड व्हाट ही डिड वाज उसने 500 रुपये का ना फेसबुक पे मार्केटिंग खरीदा. एंड ही मार्केटेड इट Mhm. टू ओल्ड पीपल अदर 60 to 75 years old पीपल आर यूजिंग फेसबुक. उसको मैं बता रहा हूँ, आधे दिन में मतलब अराउंड 7 to 8 hours में ही गॉट फोर्टी Mhm. फाइव हंड्रेड एंट्रीज इन हिज डेटाबेस. Wow. 4,500 individual people entered it, entered, at least opened his game and did something. ठीक है. That's huge Yeah, and this was for that 20, hour. yeah, and this was 20% of people who actually opened the link that he shared जो marketing में गया. Mhm. Alright. तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट जो मेरे दिमाग में होते, इफ आई वांट टू कलेक्ट डेटा मैं जस्ट मार्केट कर देता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. वो लोग एग्री करेंगे Yeah. ही ना. आई डोंट हैव टू गो टू 4,500 पीपल ना. मैं फेसबुक पे कर दिया, 500 रुपये गए, ओके आई एग्री. बट दिस वाज समथिंग दैट आई हैड दैट ब्लू माय माइंड टू बी ऑनेस्ट. लाइक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया था ये पहले. आई लाइक यू आर True. ऑल्सो थिंकिंग अभी दिस ना कि Mhm. आई कुड हैव हैड सो मच रीच. अगर कुछ यंग लोगों के लिए करना, यू कैन जस्ट मार्केट ऑन इंस्टाग्राम, एक स्पॉन्सर ऐड निकाल दो, Right. कोई ना कोई तो क्लिक करेगा ही Yeah. ना. Exactly. We don't think about all this, and especially in college budget, we don't think. Yeah,
how will we market this project to reach so many people? Yeah, That's not a problem statement we work on. Our problem statement is how will this solve a problem, or how will this specific model give 100% accuracy or 98% accuracy. We don't think how will we actually get customer if we deploy it somewhere, if we sell it to a stakeholder, how will we sell this product, how will we get customer, how will we build a business model on this. yeah. I genuinely think that एक ना like चार like okay, I'll ask you okay थोड़ा सा अभी let's have cheap shots at each other. तो एक मेरा एक ये बहुत था कि what did you do for Yeah. your thesis, जो हमारा फोर्थ ईयर का thesis होता है lab book, what did you do for it? For my thesis, what I was working in my company में तो उसी का थोड़ा थोड़ा कर दिया. I didn't have time to do a Obvious, completely obvious. different project. वो है. So I can't talk too much about क्यों company का project है, but it is basically finding market leads Okay, uh, for to buy our projects okay, using ML algorithms to find people who are good enough to advertise. okay. So So that the buyer. yeah, so I think I have worked on something far better, so I'm gonna brag about it for next 2 minutes. Right. So Because I had a job. yeah, oh yeah, so I'm Yeah. jobless, agree. Right. Huh. Okay, so my thesis was basically on an optimization framework for OrbSlam using just monocular cameras and using 5G on a light. English आराम से Okay, okay. आराम से So सबको समझाना है. yeah, all right. So I'll go one by one. So it's an optimization framework for OrbSlam. So OrbSlam is a kind of localization and mapping algorithm that you can use for navigation and a lot of different purposes. It basically creates a local and global map, right? Mm-hmm. So मेरा framework जो था, it was based on monocular camera, a single camera that you can use for mapping. Why is it tough? How Mm-hmm. many eyes do you have? You have two eyes, right? Can you gauge your depth of an object with just one eye? You cannot. But Right. you can maybe gauge relative depth. So I took relative depth as Mm-hmm. a metric for me to be honest, and optimization we were using light unmanned ground vehicles. So light मतलब उसपे it does not have a proper GPU CPU processing. It has a very slow like kind of a system like a microcontroller microprocessor which can send data Mm-hmm. very fast to a server. And इसके लिए we were Okay. using 5G. So 5G is not it's Okay. yeah it's very similar to the technology that mobiles में जो 5G है it's exactly same but जो network हम लोग use करते हैं that's a Mm-hmm. private 5G network. So imagine you are a government organization. Imagine you are some kind of a local law enforcement or something, and you can have a portable 5G system. So you have जो Jio Airtel के SIM cards आते हैं, you can have a private SIM card that is maybe given to your network only. एंड तू Mm-hmm. उन्हीं के बीच में कम्युनिकेशन कर सकता है एंड इट्स वेरी फास्ट. So you Okay. can get Okay. almost Mm-hmm. what do you say 20 milliseconds latency over 3 kilometers or 4 kilometers जैसे ये है तो Wow. that's very good, very high powered Uh-huh. system, but it's Right. theoretically very good to be honest. तो इन Uh-huh. तो इसको यूज कर सकता है एज अ बैकएंड फॉर स्लैम टू वर्क on an edge server, but you are controlling it for navigation on a local device, on a small छोटा सा device है. So you can create maps on a large server, send it back to the device that's lighter so that it can navigate. Or you can have some kind of backup. Mm-hmm. So it's a ये हमने explore किया था हमारे इसमें. Maybe it काफ़ी लोगों ने try किया हुआ है, but हमारा monocular camera and 5G we kind of try to make it a novel approach जो maybe किसी industry में कभी काम आ जाए. We didn't directly take an Mm-hmm. industrial ये, but हमारा sponsored project था. We got 5G hackathon के थ्रू ग्रांट वगैरह मिली हुई थी तो इट हमने पूरा लाइक कंप्लीट किया है. एंड जो थीसिस था इट वाज वेरी लाइक आई कैन नॉट शो द वीडियो अभी बट मैंने तेरे को भेजा ही हुआ था. यू रिमेंबर द मैपिंग वाला पार्ट. इट वाज एक्चुअली आवर ओल्ड Yeah. Yeah. प्रोजेक्ट. इट वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आवर ओल्ड प्रोजेक्ट. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर अन्वेषक. Yeah. You Yeah. we created that kind of fire वाला document. But yeah तो हमने उसी से Uh-huh. adapt किया था mostly mapping वाला thing. And it happened exactly as I wanted it to. I could gauge so like I'll tell you a bit more about the pipeline हमारी कैसी थी. So we had a mapping pipeline and then we had an AI detection pipeline. So we used a YOLO model जिसके में obviously custom train किया हुआ था. A YOLO Mm-hmm. model जो humans and object को detect करेगा
एंड जब वो डिटेक्ट करेगा इट विल सेंड अ क्या बोलते हैं, अलग से एक पैरेलल प्रोसेस करके इट विल सेंड द ओरिजिनल थ्रेड सम डेटा। जो डेटा के अंदर जो स्लैम चल रहा है वो इंडिविजुअली चलता रहेगा, बट जो अच्छा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है वो आराम से अलग जीपीयू पे पैरेलल चल के इट विल कम बैक टू द सिस्टम एंड देन इट विल मार्क एट द करेक्ट प्लेस। तो पूरा got it. So you did entire parallel processing in cloud, and once you're doing क्लाउड SLAM ना, दिस इज अ processing. लोकल कोर, दिस इज अ लोकल कोर। Acha. So what did you use? Jetson Nano. रास्पबेरी पाई 02W। Oh, या तो इट्स बेसिकली what are his specs? वो It has. टू कोर्स 512 megabytes of RAM, megabytes। Okay. Yeah, it's shit to be honest, but okay, I'll tell you. Uh-huh. 480p, 60 fps, 60 fps, Mm-hmm. Mm-hmm. H.264 encoded with telemetry and control data. I don't know half the shit you said, but I heard 480 and 60 FPS. That's good enough, I think. 60 Raspberry Pi पे 60 fps is, whoever knows this, I know. I know. I know uh, this. I have made the oof. project. It's it's a big deal. Yeah, okay, we are sending, obviously. It's similar to a cloud system, but it's more secure than a cloud system. I'll tell you why. तेरा जो घर का Mm-hmm. लोकल नेटवर्क है जो राउटर पे चलता है, nobody can access Mm-hmm. it. Do you know that? Right. Unless he's connected to your Mm-hmm. network. The same Mm-hmm. logic is for private 5G networks. जिनके पास वो private SIMs है. Imagine your router is a private 5G network and all the devices which are connecting via Wi-Fi, they don't connect via Wi-Fi, they connect via SIM card. That SIM card acts as an Mm-hmm. encryption here. So you can bypass jammers as well as encryption networks as well as someone who is trying to hack in if you're not connected to internet. It becomes a pura local network. Pura ka pura local network. Acha. Uh-huh. Is this out in market yet? I don't know. I'm not Yeah, now obviously, into 5G and shit. 5G, it's काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। देयर आर ऑलरेडी 5G इन अ Mm-hmm. बॉक्स, काफ़ी सारे डिफेंस एंड इसमें भी यूज़ हो रहे हैं। जस्ट थोड़ा सा और आई थिंक एक साल में मे बी आ जाना चाहिए, मे बी, Mm-hmm. like this year the whole IMC, the India Mobile Congress was based on 5G. Everyone was working on Acha. 5G वहाँ पे, and that's why Mm-hmm. I enjoyed it a lot इस टाइम दिल्ली में। तो यही यहीं पे मोस्टली अपना चल रहा था कि 5G इज़ 5G। Mm-hmm. बोलने के लिए, Mm-hmm. ब्रो यू कैन गेट 450 मेगाबिट्स अप एंड डाउन ऑन 5G, Uh-huh. 45 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। It's crazy. ऑफ कोर्स, एंड उसमें इतना ही नहीं है, यू कैन स्लाइस द नेटवर्क, बैंडविड्थ को तो डिफरेंशिएट कर सकता है, यू कैन डू अ लॉट ऑफ शिट वहाँ पे। बट या, Mm-hmm. तो मेरा अभी आई थिंक आई एम जंपिंग फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, कभी हार्डवेयर, कभी गेम डेव, कभी सॉफ्टवेयर, बट आई वांट टू ट्राई एवरीथिंग। लाइक आई Right. आई हैव अ माइंड ये कि आई सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। लाइक आई डोंट नो इफ यू वर देयर, वी क्रिएटेड अमंग अस इन रियल लाइफ, लाइक जो AR/VR क्लब में हमारे Uh-huh. साथ थे। सो वी एक्चुअली क्रिएटेड Uh-huh. बिब्स, वी क्रिएटेड बिब्स फॉर पीपल विद QR कोड्स, एंड मोबाइल पे Uh-huh. दे हैड स्कैनर्स, लाइक कंप्लीट, हमने Mm-hmm. हमारा कंप्लीट ऑगमेंटेड रियलिटी का एक ऐप बनाया था, एंड दे हैड स्कैनर्स। तो वो स्कैन वैन Uh-huh. करके यू कैन किल पीपल, यू कैन डू टास्क। इट वाज लाइक अमंग अस इन रियल Ah, लाइफ, बट crazy. yeah, and it worked better than, it had glitches but it worked far 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 better than we expected, to be honest। Uh-huh. एंड कंप्लीट हमने That's डिसाइड, very cool. तो इट वाज अ यूनिक, आई हैड नेवर सीन, लाइक ये जो आइडिया था, लाइक आई ऑब्वियसली हैड अ स्मॉल टीम जो काम कर रही थी, लाइक हमारी टीम थी क्लब की। बट या Mm-hmm. दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक आइडियाज। लाइक अगर इसको लोग काम करेंगे ना, यू कैन यूज इट फॉर बर्थडे पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स, काइंड ऑफ मेक इट अ फन सिस्टम। Right. तो इट कैनॉट, Yeah, makes sense. social deduction It's games, obviously the reason why Among Us worked is because of, it's basically like a board game that's not boring. you don't have to make it that one. It's just fun. You don't have to explain about it. Yeah, okay, tell me I think. बोल क्या, Mhm. बोल बोल बोल। I made this. I made this chart. Let's take a second. Okay. This was I was cooking out. There are two axes. Okay. Okay, There is like tech axis. There is business axis. Okay. okay, Not really axes, but like
Just bear with me, okay? What's the There's down tech, arrow? What's there's the down business. arrow? This is like how deep you want to go into the tech thing. Okay. Okay. So let's say here is AIML. Okay. There is one thing you can go completely deep into. There is, I don't know, back end work you can go deep into. There is front end work you can go deep into. You can go deep into specific niches. Okay. Same with, and but the bigger line is the overall stuff. Thoda thoda. Okay. Okay. Everything. Same with managing. It's like you should know thoda thoda sab cheezein, but obviously managing and business also has very niche fields which you can become an expert on. You can be in this, I don't know, I expect marketing mein expert, uh legal team, blah blah, etc etc, right? I think Okay. as as an engineer, this is what I observed, okay, or at least what I want to be good at is these three axes. See, Yeah. you should have one deep technical thing which you're good at, okay? Like completely specialized in. You should have an overall idea of everything, how that works, like the entire tech thing, thoda thoda. And you should know entire marketing thing, thoda thoda. Like not go niche into anything in marketing or business. Maybe if you want to do MBA and stuff, go for it. If you want to completely go into very specific terms, go for it. But I think you can always hire people to do that. Yeah. But you should know, understand overall business, overall tech, and one specialization. I think what you're trying to say is if anybody else is trying to make a big mistake, you should be able to point it out. Interesting take. Eh, I think that's the most apt way to explain this, if I'm not Hmm. wrong. Because, I was just thinking about like having a better understanding of everything makes you good at being on almost any see, role in the I tell company. you why. ठीक है, ये जो तू बोला ना, not deep understanding. This has changed since GPT has arrived. If I be very honest, deep Hmm. knowledge is something that takes you maybe 7 days with GPT, if I'm not wrong. अगर तू पूरा 7 दिन Hmm. देता है and ज्ञान पेलने के लिए you need maybe 20 minutes on GPT. That's an interesting thing. So, how long do you think? And I don't have an opinion on this. I have not thought about this. How long do you think currently, if let's say I want to start front end, how long would it take for me to become an expert given I use GPT? 7 days. You need to give Interesting. 8 to 9 hours, 8 to 9 hours every day for 7 days to become very good in Mm-hmm. front end in terms of Mm-hmm. one framework. कोई भी एक framework. I'll not say every framework. Mm-hmm. Either React or something, any one framework, as well as HTML, CSS, and JavaScript. So HTML, Uh-huh. CSS, and JavaScript should take you 2 days. So one day is for HTML, CSS, second day is for JavaScript, and rest Uh-huh. 5 days are for React. But you have to Uh-huh. study it like you're studying for an exam. Right. I Makes think sense. 7 days is enough because the thing is, I'll tell you the main. Okay, तो देखो याद है हम लोग जब पहले पढ़ते थे 12th के एग्जाम के लिए बोले तो 10th के एग्जाम के लिए, वी यूज टू मेक वेरी डिटेल्ड शॉर्ट नोट्स पॉइंट Mm-hmm. वाइज, मुगल्स के बारे Yeah. में बोल लो या फिर Yeah. 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 हिस्ट्री के बारे में. आई यूज टू मेक स्मॉल, हड़प्पा में ग्रेनरी था, ये था, वो था, मोहनजोदारो में ये था. आई शॉर्ट नोट्स वाई बिकॉज दे यूज टू सर्व एज अ रिमाइंडर कि ये Mm-hmm. बोलना है. आई कैन क्रिएट अ लाइन आउट ऑफ दिस. दिस वाज लाइक मेरे रिवाइजिंग का ही तरीका ऐसा था. इफ आई यूज टू गेट अ कीवर्ड दैट वाज इन सम अदर चैप्टर, आई हैड टू गो बैक टू दैट चैप्टर एंड रीड दैट लाइन. तो दिस वाज Mm-hmm. माय वे. तो आई हैड टू क्रिएट व्हिच यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो वो नोट्स पहले से रेडी करके रखने पड़ते थे अच्छे हैंड राइटिंग में. बट जब से जीपीटी But आया now है, you can do that. या यू कैन डू दैट इन मे बी 5 minutes. लुक करते ही Yeah. है. जीपीटी को दो, True. पॉइंट वाइज बना लो एंड यू कैन जस्ट बैठ के रटना है. सेम थिंग यू Mm-hmm. कैन डू विद HTML CSS. अगर तेरे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑलरेडी पहले से है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग Mm-hmm. कि यू डोंट नो कोडिंग, यू हैव नेवर टच्ड VS कोड एवर एंड देन यू स्टार्ट, देन मे इट माइट टेक 10 days और 12 days. बट अगर तेरे को बेसिक्स आता है, यू हैव Mm-hmm. बिन इन फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड तूने कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं किया, यू वांट टू गेट गुड एट फ्रंट एंड, 7 days. आई थिंक 7 days should be the max time it takes. See,
आई नो आई साउंड एग्जैक्टली लाइक दोस पॉडकास्ट वाले लोग जो बोलते हैं कि Yeah, like ब्रो AI अब AI आ गया, अब तो कुछ ब्रो भी हो सकता है. कुछ भी या बट अगर तू जेन्यून देख, एक रात पढ़ के अगर तुम एग्जाम में ए ला सकते हो, तो 7 दिन पढ़ के यू कैन गेट वेरी गुड एट वन स्किल. बट देखो यू शुड हैव दैट हुस्पा इन यू टू सिट एंड डू इट. ठीक है. इफ आई लाइक दिस इज They माय sound very much like those. अरे fuck नहीं बट दिस इज माय लाइक No, but I do agree with it. I don't know if 7 days is enough because you might forget it like एक बार में with cramming a lot of stuff. But definitely, I think you can make a project out of it in 7 days. A good enough project where you understand every aspect of it. yeah, 7 days I think it's enough because bada like front end is not a big thing. Like you you don't need to worry about making mistakes in front end. ज़्यादा ज़्यादा क्या Mm-hmm. होगा, यू आर मेकिंग लीविंग सम सिक्योरिटी थिंग समथिंग, कुछ गलत दिख Mm-hmm. रहा है या फिर कुछ ये है. लाइक आई कैन शो यू माई फर्स्ट वेबसाइट एंड आई जेन्यूनली थिंक अभी का मेरा वेबसाइट कैसा दिखता है, पहले मेरा ज़मीन आसमान का डिफरेंट है. मैंने मेरा पहला वेबसाइट 11th में बनाया था. 11th में वी डेंट Mm-hmm. हैव जीपीटी, तो वी हैड टू लुक एट डॉक्यूमेंटेशन, वी हैड टू लुक एट ट्यूटोरियल्स. तो ये लाइक आई कैन वेरी प्राउडली से दिस कि मैंने डेवलपमेंट बिना जीपीटी के सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर तक मैंने नहीं यूज़ किया था प्रॉपर प्रोजेक्ट्स में मेरे. Mm-hmm. तब तक बिकॉज आई डेंट Mm-hmm. ट्रस्ट इट, बिकॉज ऑलरेडी डिबगिंग के लिए आई ऑलरेडी हैड आई नो इनफ कि डिबग क्या प्रॉब्लम आ सकता है. इफ़ यू नो प्रोग्रामिंग देर आर अराउंड ओनली 5 to 6 प्रॉब्लम्स दैट कैन कम इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट. सिंटैक्स एरर, को तूने कुछ गलत लिख दिया, इधर इट्स तूने गलत लिखा है, मिस टाइपो लाइक टाइपो या फिर गलत लिखा है, यू हैव गॉट यूज द रॉन्ग फंक्शन, और तेरा आउटपुट गलत है बिकॉज यू हैव मेड सम मैथमेटिकल इशू. ये 3 से 4 Mm-hmm. एरर्स ही है मैक्सिमम प्रोग्रामिंग में, और एरर्स नहीं है Mm-hmm. प्रोग्राम में. इसे तो एआई लैंग्वेजेस से अच्छे से कर सकते बिकॉज ऑलरेडी कंस्ट्रेंड है, बट डेवलपमेंट इज नॉट कंस्ट्रेंड टू 5 or 6 एरर्स. ये That's a really good point, actually. I've not thought about it that way. Syntax is constrained. What you're making, that is not. हाँ. That's why AI is good at correcting the syntax. या It's not, you can't go too wrong in that. It's there in the documentation. हाँ, तुम क्या ज़्यादा तो क्या ही कर सी. तुम एआई को लाइक देख, मैं जब भी किसी को एआई या तो कंप्यूटर समझाता था ना, आई हैड अ वेरी गुड एनालॉजी. इट्स लाइक अ वेरी Mm-hmm. स्मार्ट बेबी who knows everything but cannot think on its own. Mm-hmm. He has all the damn knowledge in the world, everything you can think about उसको पता है, बट तेरे को उसको Mm-hmm. बोलना पड़ेगा करने का क्या है. If you can Mm-hmm. describe him very well how to make a very good glass of tea, it's gonna get you a very good glass of tea. अगर तुम Mm-hmm. उसको बोल दो जाके चाय बना दो, तो वो चाय कहीं और है, पत्ती कहीं और है, तेरा घर जल गया वो अलग बात है. काइंड ऑफ वैसा ही है. तो यू नीड टू बी वेरी गुड टू Yeah. एक्सप्लेन, तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है. ठीक है. आई लाइक ये बहुत सारी चीज़ों के लिए आई थिंक इट्स वेरी ट्रू. लाइक आई वर्क ऑन Is हार्डवेयर. this a tool, right? What इट्स do अ you make टूल, with या that इट्स tool? अ टूल. What do you make with that tool is up to you. It's not constrained to the tool. I'll tell you why. I'll tell you an example. This is a very good. It's a very good website that sells electronics called Evelta. ठीक है. I love them. I love their Mm-hmm. ये. They make custom electronics. Some थोड़ा custom है वो. They have their some personal electronics वो लोग बनाते हैं which you can use in your projects directly. तो अच्छा. okay, you need a four channel. You need to control 4 motors individually with a Mm-hmm. single PCB. They have it. किसी और के अच्छा. पास नहीं है वो. It's a bit Right. costly, 1.5 or 2 Mm-hmm. times the price, but it's okay. अगर तेरे को चाहिए Mm-hmm. ज़रूरत है, you can use. अब वहाँ पे I bought a part that is a 3D printer का auto leveling के लिए. It was sorry, 3D printer के auto leveling के लिए it had a kind of a poking thing. तो एक it's a sensor that detects how close you are to the ये. अब they had a wiring Mm-hmm. schematic that was wrong. Oh. Okay. And wiring Mm-hmm. क्या है? If you connect ground and ये if you do anything ulta, you're gonna basically burn your 3D printer. Yeah. Yeah. अब Yeah. अब कोई और खरीदता है अपने 3D प्रिंटर में लगा था, दे वुड हैव फॉलोड देयर इंस्ट्रक्शंस दैट्स ऑन द पेज. Mm-hmm. बट मी बीइंग मी, आई ट्रिपल चेक्ड एवरीथिंग एंड आई फाउंड आउट कि देयर इंस्ट्रक्शंस आर रॉन्ग, because there is Mm-hmm. no way that I would be able to connect positive line to this place. If it's gone, then it will burn my system. I knew I could not do that. But ये because I Mm-hmm. had an experience with electronics, तभी मैं बोल सकता था.
तो मैंने Mm-hmm. जीपीटी को भी पूछा ये चीज़, जीपीटी वॉजंट एबल टू आंसर इट बिकॉज वो ही एग्जैक्टली वेंट एंड वेब स्क्रैप्ड फ्रॉम देयर वेबसाइट, एंड उसने मेरे को वही डिटेल्स दिए जो उनके वेबसाइट पे है। Right. एंड आई हैड अ मल्टीमीटर, एंड मल्टीमीटर से मैं 3D प्रिंटर पे लगा लगा के चेक कर रहा हूँ कि इज दिस करेक्ट और इज दिस रॉन्ग. So they Mm-hmm. had a connector. They wanted me to cut the connector and put the lines individually. But वो connector correct था. You just had to plug it in the way it came to you. अच्छा. हाँ. Yeah. So if somebody else was in my place, they might have burned their whole system up. Hmm. This is because I understand how PCBs work. I understand कि यहाँ पे अगर VCC है तो I can just probe some points and check कि क्या positive है, क्या negative है, क्या negative होना चाहिए technically. Mm-hmm. As soon as that's done, I'm good. Good example. Good example of old school, just relying on yourself, technical expertise rather than just हाँ, blindly following it. I'll give the same example for you as well. Python Mm-hmm. का because of GitHub, Gemini, GPT are able to generate very good Python codes, better than Mm-hmm. any other language, to be honest. Python Mm-hmm. and Mm-hmm. React, because of amount of libraries and amount of code that is there on GitHub, they're able to generate very Mm-hmm. good React code as well as very good Python code. But Mm-hmm. कभी कभी it makes the same errors. ठीक है, उसने Mm-hmm. OpenCV में you can write cv2 dot video capture camera 0, and you're Mm-hmm. trying to open it on a laptop with an external Yeah, webcam. it's not gonna work. Yeah, when you're doing it, उसको नहीं पता because you did not write in a prompt that you're on a desktop or you're on a laptop. So external Yeah, camera should be 1 and internal camera will be 0. it should be But it zero. will be Yeah. but it will be different if you're on a desktop, because desktop mein external camera will be the zero index camera. Or if you have some virtual Ball. cam. It's my brother call it ball knowledge. Yeah, Need to have the ball knowledge for हाँ तो this it's shit. a basic thing. It's not a very tough thing. It's not a ये Yeah. like, अगर तेरे को मैं चाकू पकड़ने दूँ चाकू को, तो you are holding it from the side of the blade, you're gonna cut yourself. तो कैसे कितना भी काटने का ट्राई कर, you need to hold it with the side that you have the handle. Because तेरे को पता क्यों है? Because it's common sense. Something looks sharp, you're not gonna just hold it and fucking वही uh, है, one aspect comes from experience. yeah. तो वही है, सी 7 दिन में you can learn जावास्क्रिप्ट, बट वो तुम्हें ऐसी गलती करने से नहीं बचाएगा. वो हाँ. थोड़ा तुम्हें प्रोजेक्ट्स बना के फक अराउंड करके तभी सीखते हैं. Yeah. मेरे पास एक बहुत हार्ड मेंटालिटी है. इफ यू जिस सेकेंड ईयर में मैंने एक चीज़ बहुत, मैं सेकेंड ईयर में भी नहीं, आई यूज टू डू दिस इन 11th एंड 12th एज वेल. आई यूज टू डू 1 week प्रोजेक्ट्स. You हम्म. start something Sunday night, you end something next week Saturday night. एक हफ्ता, हाँ. संडे का पूरा दिन तो छुट्टी मार, जो तेरे को करना है कर. दिन में 2-3 घंटा हम्म. दे, एंड यू कम वट जो भी तेरा प्रोग्रेस हुआ उतना ही रखना है. यू डोंट नीड टू एक्सटेंड इट. हम्म. यू आर डूइंग फास्ट काइंड ऑफ प्रोटोटाइपिंग काइंड ऑफ थिंग कि तुम कर रहे सीखने के, देन यू स्टॉप इट. ठीक है. एंड दिस कैन हम्म. बी एनीथिंग. लाइक एक लाइक आई नेवर, ओके, आई जेन्युइनली नेवर वर्कड इन एआई, टू बी ऑनेस्ट. मैंने कभी खुद का मॉडल आज तक ट्रेन नहीं किया. जो रिसेंटली किया वो अलग बात है, बट उसमें भी मैंने बहुत दिमाग खाया लोगों का एज हम्म. वेल एज जीपीटी का. बट या, तो उसमें आई वर्कड ऑन रिएक्ट, आई वर्कड ऑन जावास्क्रिप्ट, आई वर्कड ऑन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स एंड इंडिविजुअल लैंग्वेजेस. लाइक और एक चीज़ मेरी थी, आई यूज टू मेक स्नेक गेम इन एवरी लैंग्वेज. to under अच्छा. to understand the language and its syntax, राइट. I had a think you make the snake game in every language. I started with C++ हम्म. because मेरे को वो अच्छे से आता था. Then I went to Java and then I did it in Python. हम्म. And why I even जो हमारा जो AR का क्लब है उसमें भी मैं यही चीज़ बोलता हूँ. You make snake game, you make the most simplest game, but you understand and write each and everything खुद से, because वो logic building is very tough, man. हम्म. Like one of the examples, I think you'll be able to, if you're not able to solve, you're gonna shit yourself on live stream, so that's good. how Let's would go. how would you tell, like, okay, ये हमें हमेशा देता हूँ एग्जाम. How would you tell if a number is a हम्म. prime number or not? Oh fuck. You square root वाला logic, right? Yeah, Square obviously. root से divide and remainder. You can make it root 4 as well, root 3 as, root 6 as well. तेरे ऊपर है. हम्म. हम्म. Because वो आएगा. Because in the end क्या है, प्राइम डिटेक्ट करने के लिए you need to go through a sequence, and अगर उसमें कोई भी फैक्टर आ गया, then it's सही है. Then it's not बट prime तुम कहाँ, until you where check will you, with the root. yeah, but where will you draw the line?
Hmm. जो रूट का कैलकुलेशन है, इवन दैट टेक्स सम अमाउंट ऑफ आइटरेशंस. Interesting. Uh-huh. कहाँ पे तुम वो लाइन ड्रॉ करेगा कि वो आइटरेशन एंड जो फैक्टर का आइटरेशन है वहाँ पे ऑप्टिमल आए. इसीलिए Mm-hmm. आई थिंक सो ये जो है तुम्हारा, व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से, Ramanujan का he was working on an equation which can predict the number of prime, which can predict if a number is prime or not, or something like that. I don't know उसका. He had a lot of equations. Ramanujan has done a lot of shit. अरे bro, Ramanujan, we can't even think on he, it. We can't even think eh, 50, eh, 20% on his level, to be honest. not even 10%. Yeah. He derived like some formulas out of thin air, and he's like, "How? What is the proof?" He's like, "In my mind, it works," हाँ. and they just twist it and it works. या नहीं. He was a Bro, but his different. proof about ये क्या बोलते हैं, partitions was correct. Lot he was published a lot. Lot of shit was He committed. was His prime number, this 3 point, this yeah, the a digits of different. pi, he predicted Yeah. very long time. Very accurate and very long. Yeah. He like uska his equations are used, omega function something are also used to see. I am 100% sure we are not good enough to be physicists. We are not Hmm. even that good at maths to be BS maths, to be honest, bachelor's in science of maths, to be Yeah. honest. But we can make a program about black holes. Yes. Yes. Because I'm pushing. No, not boxing himself. Huh? we I can appreciate the make, spirit. yeah, we can make a Let's program. make a program about black hole. Yes. Yeah. Yes. Next project. Next project. तो वही है like No, but is it possible to code? Probably. Uh, जीपीटी से पूछते हैं. Probably. No, but I genuinely think I don't read books, but I read a lot of documentation. I read a lot of papers that are released by AI companies. So you should see the tug of war between Apple, Anthropic, OpenAI, and Meta. Okay, Mm-hmm. so they are literally releasing papers to discredit each other. So ये काफी पहले का है. There was a paper Uh-huh. by Apple about the illusion of thinking. Okay, I've heard about this yeah. paper. तो मुझे illusion, नाम सुना है yeah, illusion of thinking. So it was basically trying to say कि जो OpenAI and that Claude they के, don't, their model don't think. yeah, they They just just, remember, uh, they just yeah, reiterate. तो अगर तुम उनको एक बहुत yeah. ज़्यादा numbers के ऊपर कर दो तो they give it wrong. And Mm-hmm. Anthropic released a paper the next day called the illusion of thinking, where they proved Apple wrong, saying their testing methodology was shit. Mm-hmm. Yeah, there are a lot of, there are a lot of channels I think you should also watch. I don't do. Have you watched stuff made here? It's a No, hardware. my YouTube, I don't watch that much. You should watch. I Only tech thing I watch is Fireship, is very mainstream. oh that's so like news for us, to be honest. I think NDTV घर पे Yeah, आके रात को आके yeah, entertaining exactly, है. exactly, Yeah. exactly. Yeah. You should like. I would genuinely recommend Veritasium. Veritasium I do watch. Veritasium, Real Engineering, stuff made here. So I think Huh? like stuff media you should genuinely watch. That guy is awesome. He has Mm-hmm. he has worked on custom AI models to detect and place pieces of white puzzles. So camera में Mm-hmm. white puzzles. So white puzzle is Ah, basic. I've seen this video. I think you showed me Yeah, this yeah, video yeah. in last podcast or something. Yeah. तो वैसा था. Mm-hmm. तो I think those channels, I think it's entertaining. Like I don't know अगर तुम्हारे इसका entertainment क्या है. I watch stand up as well. I watch weird TV series like जैसे Yellowstone or something as well. It's a cowboy show, to be honest. And I watch engineering. Every night I have to listen to something before I sleep. Like it's my kind of a go-to way to go to sleep. So I Mm-hmm. think मेरे को बहुत मजा आता है. Like I genuinely love hearing about how Alfred Nobel created dynamite. Like उसका भी story it's very different. Mm-hmm. कि नाइट्रोग्लिसरीन को कैसे उसने टेम किया एंड ये किया एंड हाउ मेनी पीपल डाइड ऑन द वे एंड स्टफ लाइक दैट. तो काफ़ी चीज़ें लाइक यू माइट नॉट नो दैट माइट पुट आइडिया इन योर माइंड अबाउट हाउ टू डू समथिंग. I mean, it's this is also a creative field, right? Think Obviously. about it.
It's like you have the tools, but how you're gonna use that tool to build something and what you're gonna build, that is the creative aspect Yeah, of it. I you think for that you need to consume a lot of media you're very to right. get a lot of perspectives. वेरी राइट एंड मैं एक चीज़ बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ. यू शुड वर्क ऑन रिसर्च पेपर्स दैट आर एक्चुअली रिसर्च बेस्ड. तुम्हें 6 से 8 महीना लगना ही चाहिए बस कंटेंट रेडी करने के लिए. पेपर का फॉर्मेटिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग. सिर्फ कंटेंट Mhm. टेस्टिंग एंड ये सब रेडी करने के लिए तुम्हें एन अमाउंट ऑफ टाइम लगना चाहिए. यू कैनॉट डू अ रिसर्च पेपर एंड जस्ट पब्लिश इट इन अ मंथ. वाई? तुमने सीखा क्या 1 महीने में? तुमने क्या ही रिसर्च किया? तुमने कितने लोगों पे टेस्ट किया? ओके, तो वो एक काइंड ऑफ. I mean, think about research papers like what is your goal, right? I think for uh, many bachelors, their goal is either to get a master's degree or get a job. Yeah, fine. And if they dedicate 6 months into learning very specific things, that might not help. Well, they that might help, but that may not be the driving force which gets them their job or their master degree. Master करने दोगे, they'll not ask what research paper you made. They will ask the title or thesis. But what matters is if you have done two or three. So like you need to have quantitative aspect of it, that as well. They don't expect you to make very high quality people in a bachelor's. नहीं, बट एटलीस्ट यार But if आइड. if if you are at that point where like, okay, this is my thing and I want to go really deep into this particular thing, then by all means go. आई थिंक our time's up. Hmm. Yeah, even my sleep schedule and my entire clock has shifted so bad. I woke up like 3:30 today. I had breakfast. I haven't had lunch yet. So I'm gonna go have lunch right now. लॉल. नहीं, बट आई लाइक आई जेन्यूनली थिंक काफ़ी सारी चीज़ें लाइक वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल एवरी वन, लाइक अगर कोई भी सोच रहा है या फिर जिसने भी ये किया है, you need to work hard. There are no shortcuts to learning, like in terms of any kind of field you're gonna get into, or any kind of any एक देखो जो भी चाहिए, that cannot be what do you say, it cannot be a, there cannot be a shortcut to it. तुम्हें कभी कैसे ना कैसे उसको करने का तरीका ढूंढना ही पड़ेगा. You have to do it. It just because GPT आंसर दे रहा है does not mean कि तेरे को इंटरव्यूअर पूछेगा नहीं. Even if your aim is a job, he might ask you कि तुमने किया क्या है, and he might be able to detect अगर तुम एक over the view आंसर बता रहा without being excited. Because if you are like, when I'm Yeah, talking about to someone about something that I have done, I am very excited to talk about it because मैंने किया हुआ है. ठीक है. yeah. You can see the smile. That thing shows. Yeah. In every day I ask this question, what are the projects you have done? And it's very easy to know people who have done their project, they speak very passionately about it. And you can ask any aspect of it, and they'll like, oh, this is the challenge I faced, this is how I tackled it, this is what I did. And you ask someone who, just has just sailed along with their other teammates and then not done their work. They don't know, they don't care about the कुछ. हाँ हमने ऐसे करा था, कुछ तो metric यूज करी थी, कुछ तो हो गया, ये प्रोजेक्ट है देखो. Like it's you can tell it's Yeah. not that hard to Obviously, obviously, differentiate. obviously. And I would say even more than okay, hard work. I think college is a really good time. Like we are still in college, so utna nahi, but I'm talking about second year. If I had to give any advice or what I would like to have known when I was in second year is experiment and know what you like. Like हर जगह थोड़ा थोड़ा पाँव डालो, figure out what you like, and you will actually like building and doing projects in there. Like all the AIML projects, at least what I have built, and none have felt like a drag to. Like all of them, I've genuinely enjoyed making. Yeah. देख, इसे So same for him. उसको he spends money on cloud resources and better GPUs, or he uses his old laptop and keeps it on all the night for 12 hours. I spend money on hardware and tools to make sure I can get my job done faster. It's a need at the moment. Okay, like somebody told me this. I like, जब तेरे को दिन के घंटे कम पड़ जाते कुछ चीज़ करने के लिए, that's the moment you're actually loving your work.
यार आज और 1 घंटा होता ना तो मे बी ये हो जाता। True. यार 15 मिनट और True. मिल जाते ना, ये कंप्लीट हो जाता। That's, I will say, not every day. I won't want that every day, but the days where you are actually passionately building something, I was like, oh shit, it's 2 a.m. right now. I need to sleep. I hope this. I got one more iteration of training then, and हाँ। एक और बार maybe just new optimization try कर लेगा. या तो वही It's generally fun. And we're gonna sound like nerds here if you didn't get that from everything about this podcast. But if you find your niche, it's just fun to do it. You won't look into time and even key job aspect क्या है ये क्या है वो क्या है. You just do it. It's just as fun as doing देख, watching a series or playing a game. see, I'm gonna say something very corny that a lot of people are not gonna like. मैंने तेरे को भी ये चीज़ बोली हुई है यार, तेरे लाइबिलिटीज़ नहीं Mhm. है। You don't have a second family or a secret family. You don't have wife Yeah. and kids, or you don't want a house in the next year. You don't have any mortgages. Maybe somebody has loans. That's a different situation. But I'm talking about people like you and me, to be honest, right now. We don't have any liabilities. We can do whatever we want until it sustains us. We should be Mhm. able to live somewhere. We should be able to maybe on rent or something. We should be able to eat good food. We should be able to enjoy a bit. जब तक उतना हो रहा है, I would prefer to work on whatever I like rather than going into any kind of field जहाँ पे the only aim is sustenance more than growth, more than learning. True. एक True. point तक But it's a personal philosophy. It's a personal philosophy. if you are in first year, second year, I don't think बहुत ज्यादा you have to start worrying about job. हाँ, Like ठीक है, साइड में अपना लीड कोड करते रहो, थोड़ा एप्टीट्यूड करते रहो, ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट्स ही बनाना है. So make projects which you like. कुछ भी करो, You just will do learn it. something out of it. Just do it. That's my kind of ये. If you, सेकेंड ईयर में कितनी लाइबिलिटी होगी यार. हाँ ना, वो वही है तुम्हें। इफ यू आर गेटिंग टू वर्क इन अ स्टार्टअप जहाँ पे तुम्हें मे बी वो बोल रहा है कि यार ओके, यू डोंट नीड टू वर्क एवरी डे 2 घंटा दे दो, एंड बट वीकेंड्स पे यू गिव 16 आवर्स, यू गिव 16 आवर्स ना, क्या प्रॉब्लम है, क्या ही करने वाला है सुबह 8 बजे उठ के तुम। इफ कोई तुम्हें ऑफर कर रहा है, इफ यू आर गेटिंग अ चांस टू लर्न समथिंग एंड ही इज रेडी टू, मे वो तेरे को बोल देगा ओके आराध्य सुन ना यार, आई लाइक योर एंथुजियाज्म एंड ये है, you're in second year right now, so I cannot offer you a full-time position. What if you want to work every day 2 hours or 1.5 hours, but weekends pay you give me more than 10 hours each day? So 20 hours plus whatever 10 hours, so 30 hours a week. Okay, something like that. I won't say no if I would have gotten an opportunity. If it was into something I like, genuinely मेरे को उतना commit करने का इच्छा है, I could have left a lot of things for that. मेरे को नहीं मिली opportunity, मे बी तुम्हें मिल जाएगी, मे बी किसी और को मिल जाएगी, बट इफ एन अपॉर्चुनिटी इज एट योर डोर स्टेप एंड तुम मना कर रहे हो बिकॉज वो तुम्हारे कंफर्ट में नहीं है, आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग डिसीजन। लाइक इट्स अ वेरी पर्सनल ये, बट इट्स अ रॉन्ग डिसीजन राइट I नाउ। I fucked around so much in second year. Like I've tried so many things. Like I was part of ARVR club at one point. Yes, if you remember, I have You're still a done part like of it. one year. You're still a part of it. No one. Okay, Yeah. I have a philosophy. Like okay, ARVR club is something that is my kind of ये. मैंने बहुत उसमें time and ये डाला हुआ है. I have worked on each and every project. Time नहीं मिलता तब भी I used to take out time. So I have a philosophy. Anyone who was a part of a project of ARVR club is a part of ARVR club. No matter what the situation is, no matter what anything is, Mhm. he is a part of it. He or she is the part No, of it. that's a good. I like that philosophy. You don't feel left out just because the year changes. Yeah. But yeah, just and it's not limited to tech also. Like Yeah. I did psychologica, this thing, not course, but you work with the therapist in the campus, Okay. and you Yeah. learn a lot of stuff. I really like that thing. It was like 1 year thing, which there was used to be classes, and that was probably the one of the most fun things I've done in college. And I like hardly 4 people or 5 people show up to that thing. It's just available to you. You don't have to pay a single penny to do that. You get a certificate afterwards. You have worked. You can put at the end. I worked with 2 psychologists, That's okay. That's and okay. तुम्हें ना just explore shit. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ. Just don't see because sit around and let second year pass. I wish I could do more stuff in second year. मेरे को तो बहुत कुछ है, मेरे को तो बहुत कुछ करना था, मेरे को तो 5G अभी मिला है, मैं सोचा था अगर 5G थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में मिल जाता तो मैं क्या करता।
I have regrets. Everyone has regrets, man. All Hmm. right, chalo. I think we are over time. 1.5. We talked about 1 hour. Yeah, It's one and he a half. always, he always, he always Yeah. gets overtime. So okay, Alright, like guys. yeah. So I hope all of you enjoyed. Whoever was क्या बोलते free enough to be here on the weekend and New Year's. To Mhm. be honest, we love Yes. you. If you have anything, don't hesitate to reach out to us on LinkedIn, Instagram. I know हमने अभी कुछ मार्केटिंग की नहीं है, जितने भी लोग हैं वो कॉलेज के रूप में. If you know us, reach out if you need anything. I don't think we'll ever say no. ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी Yeah. हेल्प Just चाहिए, message कांटेक्ट, LinkedIn पे या कुछ भी WhatsApp कुछ पे भी or कुछ भी whatever. कुछ भी. तो आई थिंक that's something that you guys should reach out to if you have any issues. प्रोजेक्ट्स चाहिए, ये चाहिए, कुछ बात करनी है, इट्स ओके. वी आई लव ऑल ऑफ यू गाइस. ठीक है, तो I think that's it. See you next 6 months or 1 year. We'll decide. We'll post. We'll have an official announcement, which nobody cares Yeah, about. and just yeah. Tell us if when do you wanna, how frequent do you want this? Comments में or No, WhatsApp पे or anywhere. I don't know if anyone will comment, but yeah, हम लोग ही decide करेंगे. Who Yeah. cares? We care. We care. Yeah, it's I like doing this, Yeah. once in a while. It's really nice. चलो, it was very good to see you. I I think guess Happy New Year. Happy New Year, guys. Celebrate. Don't चलो. be in front of PC like Yeah. us. Don't get arrested. It just happened. Yeah. Chalo, All we'll right. see you guys later. Bye bye. Happy New Year, everyone.